We'll start solving the problems of last 5 sessions. So 2020 क्या problem है? So question दिया है, आपका सारी information इस table में है, ठीक है? The following table shows the just a minute. The following table shows the number of newspaper printed as shown inside the brackets and the number of newspaper distributed at different cities on a particular date. And then इसके बाद questions को दिया गया है, ठीक है? So city-wise question paper distribution question paper is given, okay, and printed, the newspaper printed is shown in the brackets. So in the brackets it is the newspaper printed, number of newspaper printed is given in the bracket. Okay, newspaper A total 2000 copies was printed, newspaper B total 2000 copies were printed, newspaper C 1000, newspaper D 1000, and different name of different cities are given, and these are the number of distributed newspaper. Means out of 2000, in Delhi 1000 newspaper, Lucknow 500 newspaper, Varanasi 200 newspaper, Jaipur 200 newspaper. Like this, these are the information given. Okay. निम्नलिखित तालिका में किसी खास वर्ष के दौरान मुद्रित समाचार पत्रों की संख्या जैसा कि कोष्टक में दिया गया, ठीक है, तथा विभिन्न शहरों में वितरित की गई समाचार पत्रों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका के आधार पर प्रश्न 1 से 5 का उत्तर दीजिए, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश एक साथ ले लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जगह भी छोड़ दिया, यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है? Is the question clear to you all? Yes, sir, it's clear. Okay, then we'll start solving. See, the first question, in which city the distribution of paper is minimum? किस शहर में समाचार पत्रों की प्रतियां न्यूनतम संख्या में वितरित की गई है, ठीक है। In which city distribution of paper is minimum? So distribution is, all these things are distribution. These are the distribution of newspaper, number of newspaper distributed, and in the bracket these are the number of newspaper printed. Okay, so in which city the distribution paper is minimum? How to find? कैसे निकालेंगे कि कौन सा सिटी में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम हुआ है? कैसा करेंगे? वाराणसी। सिलंग। एक मिनट इधर संगीता आ गई। So see, in Delhi, what is the total distribution of newspaper? This is the newspaper A distributed in Delhi. Newspaper B, this one. Newspaper C 320 in Delhi. Newspaper D 250 in Delhi. Okay. So in Delhi, what is the total number of newspaper? 1000 plus 750. 750 plus 320 plus 250. Okay. In Lucknow, it will be 500 plus, like this, 500 plus. Okay. In Varanasi, it will be, so 200 plus 150 plus 165 plus 155 equal to 670. हाँ 670 हो जाएगा सर वाराणसी का। और नीचे जयपुर का कितना होगा? जयपुर का कितना होगा? 845।
845. Okay, then automatically the number of newspaper distributed in Varanasi is minimum. Yes, actually is 670. So Varanasi will be the correct answer. So this will be the correct answer, Varanasi. Okay. So it will be 200 plus 150 Varanasi. 200 plus 150 plus 165 plus 155. 165 plus 155 is equal to 670. So this is the minimum among the 4 cities. Okay. कोई doubt है इस पे? Do you have any doubt in this question? No, sir. Okay, next. What is the percentage of distributed newspaper compared to printed newspaper? What is the percentage of distributed newspaper compared to printed newspaper? मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियां की संख्या की तुलना में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियां की संख्या का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन क्लियर है? So we have to find two things here. यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है. क्या क्या निकालना है? पहला एक मुद्रित का निकालेंगे सर, और क्या है हाँ, दूसरा? एक है मुद्रित का मतलब प्रिंटेड एक निकालेंगे, इतना है, और वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ठीक है, ये दो चीज हमें निकालनी है. तो प्रिंट कितना हुआ, टोटल प्रिंटेड 6,000. एडमिट, टोटल प्रिंटेड देखो 2000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1000, राइट? ठीक है, आ गया. Total meter is equal to newspaper A plus newspaper B plus newspaper C plus newspaper D equal to 6000. Correct? Okay. Now total distributed. See how much. In Delhi it is 1000 plus 750 plus 320 plus 250. Correct? In Delhi how much it is? In Delhi it will be 1000 2,320. plus 750 plus 320 plus 250. 2320 20. in Delhi. Then in Lucknow it will be 750, 1000, 1175. Lucknow. Ji, sir. Okay, Varanasi it is already you have Yes, sir. calculated 670, and next it is 845, right? Yes, Yes, sir. sir. Add them. Now, what is the total distributed newspaper? So it is obviously Delhi, Lucknow, Varanasi, Jaipur together. If you add them all, it will give you total distributed newspaper. It's Delhi, Lucknow, Varanasi, and Jaipur. Total printed equal to 6000. Distributed is Delhi plus, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, एक मिनट. हाँ, दिल्ली प्लस लखनऊ प्लस वाराणसी प्लस जयपुर. Jaipur. So Delhi it was 2320 plus 1175 plus 670, right? Plus 845. Now tell me the total number of distributed newspaper.
Add them 5010. all, सबको ऐड करिए 5010. Okay, see now the question, see the question. मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियां की संख्या की तुलना में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियां की संख्या का प्रतिशत, the percentage of distributed newspaper compared to printed newspaper. कैसे निकालेंगे? compared to किसका? compared to printed. ओके, compared to printed. so परसेंटेज कैसे निकालेंगे? compare किससे बोला गया? printed से. ठीक है, इसलिए वो नीचे आएगा. ठीक है, और printed newspaper will be up. ठीक है, into 100%. 200. means out of 6,000, 5,100 is getting distributed into 100%. will give you the percentage, right? So it will be 83.5, sir. 83.5. So 501 by 600 into 100%. Okay, you can do is सब करके देखिए कितना आता है. ठीक है, तो मोटा मोटी ये आ जाएगा आपका 83.5%. ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. So 83.5% is the answer. In your answer also it is given 83.5. So is it clear to you all? Very simple. Means सारी information आपके पास होगा. All the informations will be given to you in tabular form. ठीक है, आपको just निकालना है. You have to just calculate using all the resources here, or everything will be given to you. 100% resources will be given to you. आपको जो करना है वो है calculation, और कुछ नहीं. ठीक है, any doubt? Okay, then इस next. कंडीशन में सर कैसा है सर? 50 10 को और 6000 को ऊपर नीचे लिखेंगे कि ज्यादा डिजिट रहेगा, नंबर रहेगा तो नीचे ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं, भी आपको कंडीशन है? कंपेयर किससे करने के लिए बोला है? जैसे कि हम लोग जो लॉस या प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते थे, किसके ऊपर करते थे? कंपेयर किससे करते थे? लॉस या प्रॉफिट. जब प्रॉफिट लॉस का मैच कर रहे थे, लॉस या प्रॉफिट किसके ऊपर कर रहे थे? क्रय मूल्य के ऊपर कर रहे थे ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कर रहे थे ना. कंपेयर किससे कर रहे थे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. जी जी. यहाँ पे बोला गया आपको कंपेयर किससे करना है, बोला गया आपको. देखिए, कंपेयर टू प्रिंटेड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आपको प्रिंट हुआ है उसमें से कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो 6,000 में से, इसको आप थोड़ा विस्तार में लिखेंगे, तो 6,000 में से आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ 5,010. एक में से कितना हुआ, थोड़ा विस्तार में अगर इसको आप करेंगे. ठीक है, तो 1/6000. ठीक है, तो 5,010 में से कितना हुआ, तो ऊपर 5,010 आ जाएगा, नीचे 6,000 हो जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लिया हुआ ऐसे. मतलब बात यह हुआ कि आपको 500 नंबर में से 490 मिला, तो परसेंटेज कितना मिला? इंटू 100%. ठीक है ना. 500 न्यूज़पेपर सेम, 500 न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, 490 पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कितना परसेंट हुआ? यानी 500 नंबर में से आपको 490 नंबर मिला एग्जाम में. कितना परसेंट मिला? 500 में. ठीक है, 500 में, देखिए 500 में कितना मिला? 490. परसेंटेज कितना होगा? इंटू 100%. सिंपल है, समझ रहे हो? जी जी क्लियर है? जी सर. तो ये होगा तो आपका 5010 बाई 6,000 इंटू 100%. ठीक है, तो 83.5% आ गया इसका. ठीक, नेक्स्ट. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर सी? ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर सी इन ऑल सिटीज एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया?
सभी शहरों में वितरित की गई समाचार पत्र की प्रतियां की कुल संख्या की तुलना में समाचार पत्र सी की वितरित की गई प्रतियां की कुल संख्या की प्रतिशत क्या है? तो ये सर इसमें क्या करेंगे, शहर की जितना है और सी का जो कॉलम में जितने वितरण हुआ वो दोनों को कंपेयर करेंगे परसेंटेज में। हाँ, जितना मतलब जितना कितना है, मतलब क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूशन, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ था हम लोग पहले निकाल लिए थे। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 50-10 व्हाट है इज द सर। नंबर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करने का बोला है। इन लास्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर टू टोटल प्रिंटेड न्यूज़पेपर। नाउ this is the question they have asked you to compare to total distributed newspaper. So first you have to find out the total distributions of newspaper. तो total distribution कितना है? ऑलरेडी हम लोग निकाले थे ना थोड़ा देर पहले, 5010। 5010. ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो दिल्ली में ये 2320 हो गया, टोटल करेंगे तो लखनऊ में कितना हो गया? 1175। ये था 670 और ये कितना था? 840 845 कुछ था ना? 845 सर। 845. हाँ, तो 840 देखिए। तो न्यूज़पेपर सी आप पूछा गया जो टोटल जो आपका हुआ है, ये तो टोटल करने से 5010 पीस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आप बोला है कि जो न्यूज़पेपर सी जो सारे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टोटल, वो इसका कितना परसेंट है? समझ में आया क्वेश्चन? नाउ दे हैव आस्क्ड यू दैट व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ distribution of newspaper C across all cities. Is your newspaper C is distributed in Delhi, Lucknow, Varanasi, and Jaipur separately. So total, how many newspaper C has been distributed across all cities? Okay. Then you have to find the percentage compared to total distributed newspaper. Question clear है? Is the question clear? जी सर। Yes, sir. तो क्या करना है? What you have to do? सी का सम कर लेंगे, सी का जितना भी सम है उसको 5010 से डिवाइड करके ठीक, ठीक है, तो सम करते हैं। कितना आएगा सी का टोटल? सी कितना डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर सी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 870। 870। ओके 870। चलो करते हैं उसको। 870 हुआ है अगेंस्ट 5010। 5010 and what is the percentage of distribution newspaper in all the cities? Okay, total distributed total distribution of newspaper C is equal to 870. Okay, so what is the percentage? Percentage is 870 by, means out of 5010, 870 newspaper C is distributed, number of newspaper C is distributed is 870. Okay, so into 100%, it will give you total percentage. So find out 87 by 501 into 100%. Find out what is the five zero one divided by 167, I think 167. Simply divide 2900 divided by 16700. 167. 2900 divided by 167. Just divide. It will give you the answer. 29 divided by 167. 2900 divided by 167. It will give you 17.36%, almost 17.37 or 36%. And in the option 17.36% is there. So this is the answer. 17.36%.
क्लियर है? एनी डाउट? Yes, sir. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ठीक है? अच्छा, अब नंबर 4. What is the ratio of distribution of newspaper A to newspaper B? What is the ratio of distribution of newspaper A to newspaper B? समाचार पत्र ए की वितरित की गई प्रतियों की संख्या और समाचार पत्र बी की वितरित की प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है? क्या करेंगे? सी क्वेश्चन आर वेरी क्लियर. इन डीआई जो सबसे मजा है वो है कि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है डीआई का. सारे चीज आपके हाथ में रहेगा, आपको जस्ट वहां से देख देख के निकलना है टेबल से. ठीक है? उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है. ठीक है? सो इन डीआई एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, जस्ट यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज गिवन टू यू एंड जस्ट कैलकुलेट. ठीक है? बताइए इसमें क्या करना है. 19:15. 19:15. ओके, 19:15. चंद्रा जी का भी 19:15. चलिए देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन वेरी क्लियर. सी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका? न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी, एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो. दैट्स इट. नेहा जी का भी 19:15. ओके, 19:15. ठीक है. सो पहले निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन okay, newspaper A. How much? Total distribution of newspaper A is how much? So this is the total distribution of newspaper A, right? 1000 plus 500. 1900. आ गया. 1000 plus 500 plus 200 plus 200. So it is clearly giving you 1900 copies of newspaper A which are distributed. Now they have asked you A to B. Okay. Now distributed newspaper, the number of distribution of newspaper B, how much? Again, the same thing will do. 1500. 1500. Okay, this one. 1000 and 500. Yes, 1500. So it will give you 750. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा इधर से. ठीक है? So it will give you 1500. Now they have asked you, see, now you have the total number of distribution of newspaper A and newspaper B. Now they have asked you to find the ratio of A is to B, right? So 1900 is to ratio 1500. So clearly it is 19:15. Now see whether it is there in the options. If it is there in the options, then it is the answer. This one. Okay. बताइए क्लियर है कि नहीं? Clear, sir. क्लियर है? Yes, sir. Okay, then the next question. What is the ratio of total distributed paper to total newspaper printed? Already we have found out the numbers, I think. Right? See, total distributed newspaper and total printed newspaper. See, distributed to printed. They have asked you to find the ratio, right? समाचार पत्रों के वितरित की गई प्रतियां की कुल संख्या और मुद्रित की गई कुल प्रतियां की संख्या का अनुपात means distributed ratio printed. Total distributed is to printed. What is the number of total distribution? 5010. Already have found out in the first questions, I think. Total printed was 2000. Total distribution कितना हुआ था? 5010. Total print हुआ था 2000. ठीक है ना? 6,000. Total printed is 6,000. 6,000. Oh, sorry. 6,000. Yes. 2000, 1000, 1000, 1000, 6000. Right.
So it is 501 is to 600. So by 300 by 3, if you cancel them, it will be 167 or 200. See whether this answer is there in the options. Yes, it is there. So this is the answer. Understood? Yes, yes, sir. Clear, eh? Any doubt you can ask. तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली. See, everything is given to you. सब कुछ दिया गया, आपको जस्ट निकालना है वहां से. जो जो उनको चाहिए, जिस तरह से पूछा उसी तरह सबको निकालना है. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट. ये 2021 का है. देखिए क्वेश्चन पूछा है. The following table embodies the details about the enrollment of students in 5 different activities, namely swimming, singing, drawing, dancing, and handicraft in a school during the session 2020 and 21. Total number of 3,000 students, including 750 girls, have been enrolled in various activities in the school. Based on the data in the table, answer the following. Answer the question from 1 to 5. Okay. So these are the details of the students who have enrolled in swimming, singing, drawing, dancing, handicraft in 2020 and 21 session. Okay, so total number of students is 3,000. Out of them, 750 are girls. So first of all, we should remember the number of boys also. So out of 3,000, if 1750 is girls, then rest are boys. This 1250 are the boys. Okay, clear है? Yes, sir. हिंदी में देखो. निम्नांकित तालिका 17 2020-21 के दौरान विद्यालय में 5 विभिन्न क्रियाकलापों नामक तैराकी, गायन, चित्रकारों, नृत्य और हस्तशिल्प में विद्यार्थियों का नामांकन को दर्शाती है. विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 छात्राओं के सहित, ठीक है, 1750 गर्ल्स है, ठीक है, सहित कुल 3000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है. इसका मतलब क्या है? 3000 टोटल है, ठीक है. गर्ल्स कितना है या फीमेल्स कह लो 1750. तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बॉयज कितना होगा 1250. ये समझ में आ गया ना? ठीक है. Yes, sir. ओके, ये पहले ही रख लेना है दिमाग में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है. ओके. तालिका में प्रदत्त आंकड़े के आधार पर प्रश्न 1 से 5 का उत्तर दे. ठीक है, ये आपका दिया गया सामने. देखिए, इन स्विमिंग percentage of students enrolled out of 3,000. So out of total students, total 3,000 students, 16% of them got enrolled for swimming. Okay, 21% of 3,000 bracket में दिया गया, ठीक है. In the bracket they have given that these percentages are showing out of the total students. Okay, total. So out of 3,000, 16% in swimming, 21% in drawing, 21%, 14% in 21% in singing, 14% in drawing, dancing, 24%, and handicraft, 25% students got enrolled out of 3,000. Among them, percentage of girls, these are girls, percentage of girls enrolled out of 1750. So out of 1750, 14% girls got enrolled for swimming, 28% of 1750 in singing, 16% in drawing, dancing 20%, and handicraft 22%. Okay, आपका इसमें एनरोल किया है. ठीक, इतना समझ में आ गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल? कैसे करेंगे? विद्यालय में छात्रों का मेल का छात्रों का सन्निकट प्रतिशत अप्रोक्सीमेटली आपको नियर अबाउट आएगा, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको वही निकालना है. योर आंसर may not be the accurate answer, but near about to, in round figure it may be 40%, 42% or 20.
8% or suppose 27.66 or 41. 41 point something. So near the nearest percentage round of figure you have to take into consideration. Total students कितना है? What is the number of total students? 3000. Girls 1750. Boys how much? 3000 minus 1750. 1250. 1250. So 1250 आ जाएगा. Now they have asked what is the approximate percentage of boys in the school. So percentage of boys कितना होगा? कैसे निकालेंगे बोलिए? पवन जी बोलिए. आपका पहला जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. जो फर्स्ट जो आप क्वेश्चन पूछा था उसका डाउट क्लियर हो जाएगा. सर बॉयज का पूछ रहा है तो बॉयज को ऊपर लिख देंगे सर ऐसा. हाँ बॉयज को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल को लिख देंगे सर. टोटल को लिख देंगे इनटू परसेंटेज बोला है ना आपको. 100. ठीक है यही बात हो गया कि 3000 में से आपको 1250 मिला मान लीजिए. ठीक है किसी को 3000 में से 1250 मार्क्स मिला. टोटल कितना परसेंट मिला? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है ओके. इसको देखिए कितना आता है. 41.6. So 125 by 300. 41.3 ऐसा समथिंग. 41.3 3 41.66 आएगा. देखिए 3 से 125 है ना. 3 से 125 है ना. 41.6 आ जाएगा. ये 41.66% आ जाएगा. 66% आ जाएगा. ठीक है तो दिस इज नियर अबाउट. देखिए आपका आंसर देखिए. आंसर में क्या क्या दिया? 42. इसीलिए बोला कि अप्रोक्सीमेट सन्निकट प्रतिशत. ठीक है 42 28 30 वो किसी का भी करीब नहीं है. सो व्हिच इज द क्लोजेस्ट? 42 इज द क्लोजेस्ट टू योर आंसर. So 42% is the, you can write it approximately 42% as it is greater than this point part is after the point this part is greater than 0.5. So you can write it as the next number in round of figure. 42% लिख सकते हो. Approximately 42%. So your answer is close to the 42%. So this is the answer. 42%. Correct है? Clear है? जी सर. Yes, sir. Okay. Next. How many boys enrolled in singing and handicraft taken together? क्वेश्चन समझ में आ गया? How many boys मीन्स गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित है? बॉयज. ठीक है. How many boys enrolled in singing and handicraft taken together? Singing and handicraft. Singing ना? Singing and handicraft. Singing and handicraft. Singing and handicraft. Okay. Boys in singing and handicraft. Okay. क्या करना पड़ेगा बताइए? इसमें दोनों को ऐड कर देंगे सर. हैंडीक्राफ्ट का संगीत का कितना परसेंट आया? नहीं वही तो ऐड तो बाद में करेंगे. पहले तो निकलना है ना. कितने लोग कितने बालक कितने छात्र उसमें एनरोल किया? नामांकन कितना का हुआ? देखिए टोटल दिया गया आपको. यू हैव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3000. ओके आउट ऑफ 3000 16% got enrolled for what? Swimming. Sorry 28% got enrolled for singing. 3000 में से 21% लोग आपका किस में एनरोल किया? सिंगिंग में. ये 21% इज इंक्लूडिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. करेक्ट है? इज इट करेक्ट? इज इट अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Okay, so out of them these 28% of 750 are girls. समझ रहे हो कुछ? ये समझ में आया? Out of Yes, them sir. 8% are girls. अगर आप टोटल से if you subtract the number of girls from the total students you will get the number of boys. अगर आप टोटल स्टूडेंट्स से गर्ल्स को
सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको बॉयज का नंबर निकलेगा। इज इट राइट? समझ में आया कुछ? देखो लिखता हूं उधर, बॉयज सॉरी total students, this is including boys and girls, okay, enrolled in singing कितना है? 21% of 3000, 630. so 3000 into 21 by 100, 630. And girls, total girls enrolled in singing कितना है? टोटल गर्ल्स एनरोल्ड इन सिंगिंग बताइए 490. कैसे निकाले 490? टोटल गर्ल्स एंड परसेंटेज उनका निकाल के ये किया है सर। टोटल गर्ल्स ऑफ नंबर दिया है 28% दिया है। हाँ 1750 इंटू 28%, 28% है ना? तो कितना है इसका? 490। 490। देखिए टोटल स्टूडेंट्स 630 टोटल स्टूडेंट्स आपका सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है। दिस इज इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, और उसमें से 630 में 490 गर्ल्स है। ठीक है, टोटल 630 लोग सिंगिंग में अपना नाम लिखाया है और इसमें 490 गर्ल्स है। बॉयज कितना है? देयरफॉर बॉयज सिंगिंग कितना है? 140 140, sir. 140। तो टोटल माइनस 490, टोटल माइनस गर्ल्स, so 140, right? 140. Okay, now next question is handicraft. So number of boys enrolled in handicraft, same. Total people participating in handicraft is 25% of 3000. Boys handicraft is equal to 3000 into 25 by 100 minus 1750 into 20 by 100, 22 by 100 कितना आता है? देखो 750 minus 385. 385, so it will give you 750 minus 385 कितना आता है? 365. Okay, 365, right? Okay, चलो 365. Okay, now they have asked you what is the total number of boys enrolled in both singing and handicraft taken together. Okay, so you have the number of boys enrolled in singing is 140 and enrolled in handicraft is 65. So total boys enrolled in both singing plus handicraft is equal to 140 plus 365. Save Nuraj. So it was singing, boys in singing was कितना था? 140 था सर। 3000 into 21 by 100 minus 1750 into 28%. 1750 into 28 by 100. So it was 630 minus
boys singing equal to 3000 into 21 by 100 minus 1750 into 28% by 28% of 630 minus 490, right? It is 140. The next, boys in handicraft. It was 3000 into 25% was the total, minus you subtract the number of girls, 1750. Boys in singing was 140 and boys in handicraft was how much? 25,000 into 25 by 100 minus 1750 into 22 by 100. So it will give you 750 minus how much it was? 385. 385. That's 365. So boys in both singing plus handicraft, it is 140 plus 365. So 505. It will give you 505. So 505 is the answer. Is it clear? क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? Singing and handicraft. Now swimming and drawing. Number of girls enrolled in swimming and drawing taken together. This is easy, I think. The number of girls enrolled in swimming and drawing taken together. How to calculate? Only the table is given to you. This is swimming and drawing. Swimming and drawing. Number of girls in swimming and drawing. Number of girls. Just find out the percentage and add them. Next question, they have asked you to find out the number of girls enrolled in swimming and drawing taken together. 14% and 16%. Okay. So 14% of swimming and drawing. 525. So this is 14% and 16%. 14 and 16. 1750 into 14% plus 1750 into 16%. So how much it is coming? 525. Calculate how much it is coming. Is it clear? Is it clear to you all? Yes, sir, it's clear. बाकी लोगों को क्लियर है? एकदम इजी है अभी जो Yes, पूछा sir. गया है। सर इससे कितने- पहले वाले क्वेश्चन हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन समझा दीजिएगा सर। क्वेश्चन तो आपको पूछा कितने बॉयज सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट में एनरोल किया है, ठीक है। आपका सिंगिंग में टोटल कितना एनरोल किया बताइए। सिंगिंग में पहला टोटल कितना एनरोल किया, ये जो है वो टोटल नंबर है, ये टोटल है, ये सब जो टोटल का ऊपर है, और ये सिर्फ गर्ल्स है। आपका सिंगिंग में टोटल कितना लोग, 21% लोग सिंगिंग में नाम लिखा है अपना, ठीक है। 21% लोग सिंगिंग में नाम लिखा है, तो सिंगिंग में टोटल कितना नाम लिखा है टोटल, ठीक है। 3000 के इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों है, ठीक है। ये आपका 630 आ जाएगा। 630 बॉयज एंड गर्ल्स सिंगिंग में नाम लिखा है, उसमें से बोला गया है कि 1750 का 28%, मतलब 490 उसमें से गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉयज कितना है, 140 बचा। समझ गए हो कि नहीं? जी जी। ठीक है। सेम हैंडीक्राफ्ट में भी सेम है, 750 इस तरह से आया, माइनस है गर्ल्स का नंबर है, बोला गया देखिए ये 750 का 28%, 16% जो है हैंडीक्राफ्ट में, 22% जो है वो गर्ल्स है,
उसी को मैं माइनस कर दिया टोटल से, तो आपका निकल गया बॉयज टोटल। तो आप देखिए सिंगिंग में कितना है और इसमें कितना टोटल मिला के, सो 505 आ गया। समझ में आया? ठीक है। जी सर। जी जी। नेक्स्ट आपको पूछा कि तैराकी और चित्रकारों में संयुक्त रूप से कुल कितने छात्राओं का नामांकन है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी सामने है, स्विमिंग में 14% गर्ल्स है आउट ऑफ 1750, आपको दे दिया ऑलरेडी, आपको जस्ट उसका सिंपल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, they have given you that out of 1750 girls 14% of them got enrolled for swimming and 16% of them got enrolled for drawing, so just add them both। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ओके, कितना आया इसका आंसर? 5 to 5. 5 to 5, then 5 to 5 is the answer। then move to the next question if it is clear to you all। पापन जी आपको क्लियर है? ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम दिया गया आपको, जस्ट इसी को 1750 का 14% कितना है और 16% कितना है, इतना निकालना है आपको। ठीक है, जी जी। the number of girls enrolled in dancing forms what percent of the total number of students in the school। ठीक है, 2 डिजिट तक निकलना है। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या फीमेल्स, ठीक है, छात्राओं की संख्या विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या करना है आपको, कुल विद्यार्थी कितना है 3000, इसमें से कितना गर्ल्स डांस में नाम लिखाया उसका परसेंटेज क्या है। क्लियर है? अब डांस में कितना फीमेल्स नाम लिखा है, डांस डांस कहा गया ये 20% ऑफ 1750। ठीक है ना, 1750 का गर्ल्स बोला गया ना, 20% of 1750 is the number of girls enrolled for dance। कितना आता है, 350 आता है ना, 350 आता है ना। Yes, sir. जी सर। देखो कितना आता है, अभी इसको लोड करके देखो कितना आता है। 35/3, तो ये तो आएगा आपका 11.6666666666 कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, मींस ऑलमोस्ट 11.67, 2 डेसिमल ना, 67%। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? Question is very clear. Out of the total number of students, that is 3000, out of the total number of students, what is the percentage of girls got enrolled for the dancing? So for dancing, they have clearly told you that 20% of total girls out of 1750. 1750 is the total girls. Out of 1750, 20% of them got enrolled for dancing. So it is 350. So 350 is what percentage of 3000? This is the question. So डांसिंग में कितने लोग नाम लिखा है, कितना बालिका ने कितना गर्ल्स ने नाम लिखाया है, नामांकन हुआ है, 350 है। 1750 का 20% तो ऑलरेडी बोला गया, आपको टेबल में दिया गया। तो 350 3000 का कितना परसेंट है, क्वेश्चन वही किया। 350 गर्ल्स जो डांस में नाम लिखाया वो 3000 का कितना परसेंट है। नृत्य में नामांकित छात्रों की संख्या, हाँ, नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या आउट ऑफ 3000 जो डांस में नामांकन हुआ है गर्ल्स का 350 है ना। 1750 का ब्रैकेट उसमें देखिए टेबल में 1750 का 20% जो है गर्ल्स वो डांस में नाम लिखा है अपना, ये 350 आता है। आपको पूछा है जो 350 है वो कुल 3000 का कितना परसेंट है, वही पूछा है। जो 350 है वो 3000 का कितना परसेंटेज है, 2 डेसिमल तक बताइए। तो एक का करने से 11.666666 ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, तो 2 डेसिमल तक 67 तक आ सकता है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir, it's clear. ओके,
Next is, what is the ratio of number of girls enrolled in swimming and number of boys enrolled in swimming? Okay. तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्रों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग and number of boys enrolled in swimming. Then you have to find out the ratio of girls and boys. Okay, girls swimming is to boys swimming. So what is the number of girls swimming, girls registered or got enrolled for swimming? 14%. 14% of 750. So girls swimming, 17, 50 into 14%. कितना आता है? 245. 245. 245. 245. जी सर. 245, right? Okay. Then boys in swimming, कैसे निकालोगे? How many boys got enrolled themselves for swimming? पहले टोटल से निकाल लेंगे फिर वो Yes. माइनस कर देंगे. टोटल से सी बस 245 माइनस कर देंगे, है ना? अभी जो 245 आया है टोटल से, सी टोटल स्विमिंग, टोटल इन स्विमिंग कितना परसेंट आया था टोटल का? 16% ना? जी सर. So this will give you 480. ठीक है? 480. 480 में से out of 4, this is the total number of students got enrolled for swimming. Total number. Out of them 245 are girls. So boys in swimming how much? 235. इतना क्लियर है कि नहीं पहले बताइए. Up to this much, is it clear to you all? Yes, sir. Now, girls swimming. Now they have asked you to find the ratio of girls enrolled in swimming to boys enrolled in swimming. Girls in swimming how much? 245. And boys 235. So you cancel them by 5. It will give you 580. 540, 49. 49 is to 47. 47. One is okay. 49 is to 47 is the answer. Okay. One is pen number, so it will remain 49 is to 47. So is it clear to you all? Did you understand Yes, how sir. did I find out the number of boys enrolled in swimming? स्विमिंग में कितने लड़के कितने बॉयज एनरोल किया वो कैसे निकाला वो समझ में आ गया ना? देखो, Yes, sir. हाँ, टोटल 16%. This is including, these figures are including both boys and girls. Okay, out of 3,000, and this is only girls. So you know the total number. Out of 100, suppose 70 are girls. What is the number of boys? It is obviously understood that 30 are boys. So obviously, if you subtract this part from this part, you will get the number of boys only. This is the total number. They have written you. They have given you. Already they have mentioned in the bracket that this is out of 3,000, and this is out of 750. That is, this is out of girls only. This part. Okay. So in swimming, total 480 students got enrolled. 16% of 3,000. Out of them, 14% means 235 or 245 are girls. Okay. So what is the number of boys? So out of 480, 235. Okay. 235 is the number of girls. Sorry, 245. 245 is the number of girls. 14% of 1750. Out of 480 total students got enrolled for swimming, 245 of them are girls. So boys are obviously 480 minus 245, it will give you 235. Now find the ratio. That's it. Clear है? पवन जी clear है? लास्ट में थोड़ा समझ में नहीं आया सर.
लास्ट में इतना ही है आपका टोटल। देखिए टोटल कितना लोग स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया पहले बताइए। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है वो टोटल है। दिस पार्ट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एनरोल फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना स्विमिंग में गया बताइए, आप खुद बताइए टोटल स्विमिंग में कितना लोग गया। 16% ऑफ व्हाट, 3000 जी टोटल। जी 16% ऑफ 3000 मीन्स 480। 480 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो आपका स्विमिंग के लिए एनरोल किया। ठीक है, गर्ल्स कितना जी है उसमें से बताइए, गर्ल्स कितना है। 40 है। 70 50 का 14% है ना। सो दिट इज जी गिविंग यू 245। समझ में आ रहा है कि नहीं। आउट या ऑफ यहाँ 480 उसमें जो 480 है वो टोटल 3000 में से है। 3000 जो है वो इसमें बॉयज गर्ल्स सब मिला के है। ठीक है, तो 480 जी में बॉयज गर्ल्स मिला हुआ है। 480 में 240 गर्ल्स है तो बॉयज कितना है। 480 में 245। 2 माइनस कर देंगे ना 35, बस वही तो है। आपको ये गर्ल्स और बॉयज का ये दोनों का परसेंटेज रेशियो निकलने के लिए बोला है, बस इतना ही तो है। समझ में आया। यस सर। बस 245 और 235 जो आया है ना उसका आपको रेशियो निकलने बोला, 245:235, बस उतने ही बोला आपको। समझ में आ गया ना। टोटल आपको दिया हुआ, आपको एक एक चीज दिया जाएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। आपने अभी जो whatever you have learned in mathematical aptitude question, whether it is percentage, ratio, average, anything, you have to implement the concept here in DI। ठीक है, बहुत इजी है DI, 10 में से 10 आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक, आज का क्लास यहीं पे रखेंगे। कोई डाउट है आज का क्लास का रिगार्डिंग तो बताइए।